Welcome everyone. Sorry for the delay. So we are here for yet another webinar from PhysioZine. Welcome everyone, and we are seeing a huge response on this one. Thank you so much for everyone who has joined into this, and please be throughout our webinar. Firstly, I'd like to welcome Dr. Smati Sambyal. I'm sorry if I'm mispronouncing your name. It's She right. has she has done her master's in neurology, is an associate professor and a neurophysiotherapist at University College of Physiotherapy, Baba Farid University of Health Science, Faridkot, India. With over 16 years of rich academic experience and clinical experience, she has established herself a leading expert in neurophysiotherapy, specializing in neurocritical care, ICU, pediatric, and neonatal rehabilitation. A significant focus of Dr. Samyal's work is hemophilia and thalassemia rehabilitation, alongside deep expertise in stroke, cerebral palsy, and Parkinson disease. She is a certified BLS instructor, actively conducting training programs at major institutions, including AIMS, and has designed rehabilitation modules for post COVID recovery. Her scholarly impact is extensive, featuring 50 plus national and international journal publications. She is a published author, having written clinical practice guidelines and two books: the Hope Book, a vital patient education book for hemophilic patients, and the Parenting Guide, Family First, Raising Healthy, Happy, and Confident Kids. Dr. Sambyar is a recognized speaker and panelist at national and international forums, including the World Federation of Hemophilia (WFH) and the Asian Confederation of Physical Therapy (ACPT). Her contributions to field have been recognized with numerous prestigious honors, including the FUHS State Award and Women Achievement Award, IAP Women's Cell, and Young Scientist Award. Welcome, ma'am. Welcome, and thank you so much for being here, ma'am. Over to you. Thank you so much, Dr. Arish. And you don't have to feel sorry. I have to feel sorry because I am technically very poor. These technical gadgets, I am not much interested in using them. And before I start, it's a pleasure to connect with you all. I actually wanted to see all of you. That's why I have joined through two devices. I I request want all the members of our family to please switch on their cameras so ma'am can see all of you. uh, I love teaching face to face, and this is for the first time I will be teaching through a technology. And I would love to see their faces, their reactions throughout the webinar. And I also want to keep a check if somebody is not sleeping because it is a post lunch session. True, ma'am. So, ma'am, Thank some of you, have Dr. response. Arish. Yes, yes. You introduced me very beautifully and used very heavy adjectives for me. And now the load on my shoulders is increased. Automatically, I have to deliver my best. And again, I would like to give a big thanks to Dr. Darshan, who has taken such a pain for the profession and doing such a wonderful job by conducting these webinars. One thing I would like to add in my introduction is that Dr. Smati Sambyal, a lifelong learner. This word you will understand after the presentation is completed why I use this word with me, a lifelong learner. So if everyone is there and everyone is ready, I can start with the presentation. Yes, yes, ma'am. We can start with the presentation. Okay. During the presentation, I request all the attendees to please just not switch on the microphone. And if you have any question, please raise hand and we can ask the same in the chat box and we can continue with the presentation. Thank you, ma'am. Okay. Before I start, the topic today is neuroplasticity in action, how the brain rewires through physiotherapy. So, neuroplasticity is, I mean, a very fascinating word. Everyone listens, sabko lagta hai we should know what is neuroplasticity. But actually, I should tell you that neuroplasticity you all have been dealing with throughout your life. आप सब यूज कर रहे थे, बस आपको पता नहीं था that you were using that. Before I start, my first question to everyone is that
Does the brain stop developing after age 5? I know you cannot answer me because aap sabka mic has been switched off. So I will tell you the answer. Answer is no. Yes. Answer is no. The brain continues to change and adapt throughout the life. Now, coming on to the brain. As a neurophysiotherapist, I have many time encountered many students, many of my colleagues who say कि यार neuro बहुत difficult है, brain to understand brain it's very difficult. But just to make it easy, I have connected today brain with a cricket team so that you all just take away the thing with you today and you never ever forget that. Why I choose cricket team? Because cricket, I think everyone knows what every player is in the cricket is doing. So, starting with first is the motor cortex. Motor cortex, I have given the name to motor cortex is the batsman. Second is the cerebellum. Cerebellum is the coach. Third is basal ganglia, the all-rounder. And next is the sensory cortex, the wicket keeper. And prefrontal cortex, the captain. Now, I think आप सबको पता होगा बैट्समैन का रोल क्या होता है, कोच का रोल क्या होता है, ऑलराउंडर का रोल क्या होता है, विकेट कीपर का क्या रोल होता है एंड कैप्टन का क्या रोल होता है. Now just let's start understanding this one by one. First is motor cortex, the batsman. What batsman does? Starts the action, generates the main movement, decides when to lift the bat, swing, or defend. Without the batsman, no movement begins. So, your motor cortex is the one who begins the movement. Coming on to the second one, cerebellum. Cerebellum, the coach. Coach is sitting outside. अब आप देखो, your brain hemispheres, cerebral hemispheres, उनके पीछे cerebellum is sitting behind, बाहर बैठा है, but the coach is sitting outside but controlling everyone inside by correcting timings, improving coordination, making fine adjustments. If the batsman or the bowler mistimes any shot, the cerebellum corrects it. We all know the cerebellum is responsible for balance, coordination, fine movements, everything. So, cerebellum is the coach. Next comes your basal ganglia. Basal ganglia is what? All rounder, Hardik Pandya. तो what he does, हार्दिक पांड्या क्या करता है? सब कुछ करता है. Makes everything smooth and predictable. For example, walking, writing, cycling, these all movements. We just need once to learn this. उसके बाद क्या होता है? Throughout our life, we do it just because of the basal ganglia. It makes the movements smooth and predictable and forms our routines. Next is the sensory cortex. My favorite, धोनी. विकेट कीपर. अब विकेट कीपर क्या करता है? विकेट कीपर, if you know धोनी, he is the smartest, fastest, the wittiest person in the cricket team. सभी sensations को open रखना. Right now also we are sitting. हमें n number of sensory inputs are coming from the surroundings, visual, auditory, everything is coming. उन सबको analyze करना, उन सबको देखना. The cerebral cortex is doing this part. The sensory, cortex is doing this part. Its job is continuously monitoring, just like sensory input. Next is your prefrontal cortex. Prefrontal cortex is the captain. It sets the plan, makes the decisions, predicts outcome, guides every player. Without the captain, the team plays without strategy and purpose. The coach is sitting outside, but the captain has to take the decision inside. The inside decision is being taken by the prefrontal cortex. Prefrontal cortex is the front part of our brain. And all the decisions and settings and planning, it is being done at the prefrontal cortex level. Now, just if we revise, हमने अभी क्या पढ़ा?
हमने क्या पढ़ा? मोटर कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया, सेंसरी कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बैट्समैन, कोच, ऑलराउंडर, विकेट कीपर एंड द कैप्टन. Now look at this video. What the person is trying to do? He is trying to learn skating. कर रहा है and he fall down. Fortunately he stands up, but अगर मैं करती तो I should have for definitely fallen down. मैं गिरती ही गिरती पक्का. But अब इसमें हो क्या रहा? What is happening here? He is learning something new. If I start learning this skating, the same thing will happen with me. When you learn a new movement, the team plays new vibes at first. The batsman mistime shots, all-rounder fumbles, wicketkeeper reacts late, the coach cannot coordinate properly, the captain gives instructions but players are confused. The entire team is out of sync. सारा का सारा टीम ही आउट ऑफ सिंक है बिकॉज हम कुछ नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू एंड जब हम न्यू लर्न करने की कोशिश करते हैं वी लैक something called practice and repetition. There is no practice, no repetition. For the very first time we are performing something and we are not able to do it properly. Now again, you may take this video as a funny video, but if I also try to do it for the first time, मैं भी गिरूंगी. I will also fall again like the skating video. So this happens when what happens when you start learning a new exercise? A child starts learning handwriting, writing skills. A patient tries to walk after stroke, or someone practices balance training. जब भी आप for the very first time you do these things, what happens? The tendency is to fall. आपके गिरने के chances होते हैं. आप उस चीज को complete नहीं कर पाएंगे because you're learning that thing. The brain is trying, but the team is inexperienced. अभी वो try तो पूरा कर रहे हैं. Every part is trying, but the whole team is right now inexperienced. With practice and repetition, everything begins to change. The batsman hits the ball with perfect timing. The all-rounder anticipates automatically. The wicket-keeper becomes quick and sharp. The coach refines movements and the captain communicates smoothly with the team. And finally, slowly, step by step, practice by practice, the brain becomes a well-coordinated cricket team. When a well-coordinated cricket team works, what we get? We get World Cup, champions. जब सब काम एक साथ करेंगे, अच्छे से करेंगे, practice होगी, then we will definitely reach to our goal. We will have the success. And this is neuroplasticity, the ability of the brain to reorganize, improve coordination, and establish new pathways. This is what neuroplasticity is actually based on. Don't ever think neuroplasticity is only for patients. Neuroplasticity is being done or followed or experienced by everyone on this earth. Everyone is doing that. Next, that we were talking about some normal individuals. अगर हम बात करें किसी injury, after injury or stroke, क्या होगा? Then team effort. What is team effort? Think of it like a team star batsman. अगर कोई एक out भी हो जाता है, कोई injury किसी को आ जाती है, injured out हो जाता है, then what happens? Does the team fumble? No. Does the team collapse? No. Other players step up, roles shift हो जाते हैं, the captain reorganizes the team and new players are trained, the coach guides them repeatedly. And finally, this is known as the functional reorganization after the neural injury. After the neural injury, functional reorganization happens because there was some injury in the patient. It was not only a normal individual, it was a patient. Now comes what is the role of the physiotherapy? Role of physiotherapy क्या आएगा? What's that? Outside the brain, you are the head coach. Brain में हमने एक coach बना दिया था, but outside that you are the head coach. Physio is the head coach, ठीक है, of the entire team. You decide which player needs more training, which skills to repeat, how much intensity to apply, what drills to practice, how to rebuild team coordination. Your therapy shapes how well the brain reorganizes. You are literally training the brain's cricket team to play again. And physiotherapy is the practical application of neuroplasticity. These are the main things which a therapist is applying or doing. You know कि cerebral cortex में
जो पूरा कॉर्टेक्स है उसमें से हमने बेसल गैंग्लिया पे वर्क करना है, सेरेबेलम पे वर्क करना है, ऑन विच पार्ट यू आर गोइंग टू वर्क, विच इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर. असेसमेंट इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ दिस होल सीन. आपका अगर असेसमेंट अच्छा है, इफ यू हैव डन अ गुड असेसमेंट, then only you will be able to find out these things and work on them. Next, I would like to discuss about is neuroplasticity आया कहाँ से और कब आया. And you will be surprised to know कि this term actually is बिचारी ये term it is fighting for a justice to get a recognition in medical field. Recognition नहीं मिल रहा था, नाम नहीं मिल रहा था इस term को कितने समय तक. And starting from 1890, James were the first person to first conceptualize this and mention this word. But the disappointing part was that term was not given. This term was not given itself. 1920s and 30s mein what happened? 1920s and 30s mein early experiments were done by Carl, and term still nahi aayi thi. It was not there. The term plasticity was first used in 1948 by Jerzy, and again it was neural plasticity. For the very first time, neural plasticity word was used. In 1960, जो modern concept आज की time में चल रहा है, उसका कुछ part started emerging just because of the evidence. Evidences started coming. And in 1970s से लेके 1990s तक 20 years, extensive researches were done, and finally बिचारी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी टर्म को अपना रिकॉग्निशन मिला, एंड इट गॉट इट्स नेम न्यूरोप्लास्टिसिटी. एंड इन 2000 यू कैन सी राइट नाउ अ रेवोल्यूशन हैज कम. अगर आप गूगल पे राइट नाउ इफ यू विल पुट इन ऑन गूगल न्यूरोप्लास्टिसिटी रीसेंट रिसर्चेस, दुनिया जहान की रिसर्चेस विल कम ऑन द स्क्रीन. And this is these researches are now exploding on stroke, Parkinson's, BCIs, robotics, functional electrical stimulation, and n number of other things. And the core foundation of neurophysiotherapy right now is neuroplasticity. And one thing I would like to tell everyone is that I had done my BPT in year 2008. मेरे syllabus में neuroplasticity नहीं था. I was not having neuroplasticity in my syllabus. And when I joined this university in year 2010, the very first batch which I got as a guide, a student I got as a guide, and then I came to know that this neuroplasticity has been added in the syllabus. So for me, it has been in the year 2008 to 2010, जब ये नॉर्थ इंडिया में I think अपनी existence इस word ने बनाई होगी, neuroplasticity. Now, next, coming on to what is actually the neuroplasticity. I will be giving a very simple definition. I have not coined it from any research article or something, because I wanted to keep this very simple and basic, because the audience I know are mostly BPT students. So a very simple definition for neuroplasticity is: neuroplasticity is the brain's ability to reorganize itself structurally, functionally, chemically in response to experience. जब भी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज का, structurally, functionally, chemically, whatever changes come in our brain is neuroplasticity. And next, it is how the brain repairs itself, rewires after injury, and learns new skill. हम जब भी कोई नया स्किल लर्न करते हैं, मैंने आपको बोला, एवरीवन इज हैविंग दिस न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस इन योर ब्रेन. आप कुछ भी सीख रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज गोइंग ऑन. आज भी आप कुछ सीखेंगे, न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस विल कम इन योर ब्रेन. It is not only about the patients. Now coming on to the 3 types of plasticity which we see. The first type is synaptic plasticity. Synaptic plasticity is very short term. It happens within milliseconds to minutes. Next comes the structural plasticity. New synapses, dendrites, and sometimes new neurons are formed. This happens from days to months. And last is the functional plasticity, shifting a function from a damaged area to a healthy region. Critical in stroke recovery or Parkinson's or cerebral palsy. Understanding this, very easy, very basic. For example, I need to learn skating today. Skate सीखने जा रही हूँ आज मैं,
और आज का दिन I did it for 1 hour, a synaptic plasticity will occur in my brain in that particular 1 hour. But if I continue this for another 10, 20, 30 days, then structural plasticity will occur. And these two are basically for normal individuals. Functional plasticity occurs when there is an injury in the brain, for example, in stroke or in cerebral palsy or any other disease. Next, coming on to which theories basically define this neuroplasticity. The first theory is, this is a very common theory you will be hearing again and again, and on internet also आप कोई भी article उठाएंगे सबसे पहले यही वाली theory आती है, हेब्स, Hebanian learning theory. हेब्स की, डोनाल्ड हेब्स की theory थी, and please learn this line right now only. Neurons that fire together wire together. Very simple theory given by Donald Hebb. It is neurons that fire together wire together. And the second theory is use it or lose it. It was given by Jones in 2008 only. अब आप बताओ, मेरी तो डिग्री कंप्लीट हो गई थी, जोन्स ने उसके बाद ये दी है theory, है ना? तो I am also learning. And what this theory says, use it or lose it. And the second part is use it or improve it. Very simple, very basic. अगर मैं आपको आज की डेट में बोलती हूँ, again taking the example of skating only, कि I am going to learn skating, I am using it, I learn it, I use it, and after some times, after let us say 2 months, मुझे कुछ काम पड़ जाता है and I become very busy and I don't practice skating. What will happen? I will lose that. And if in the similar way, अगर मैं इसको नहीं discontinue करती, then what will happen? I will improve it. And हो सकता है in meantime, I become the master of this particular skill. एक skill को कैसे use करके lose भी किया जा सकता है बाद में, improve भी किया जा सकता है. It totally depends upon the person to person, patient to patient. And this is the theory given by Jones. If the skills are not trained, the neural circuits weaken. And if repeated meaningful practice is done, it strengthens the circuits. And this is very important कि ये task specific training जो हम करवाते हैं, specifically use it and improve it वाला principle is being used there. We again and again do a repeated meaningful practice. This is task specific training. Now the next important part is biological foundations of the plasticity, neuroplasticity. Biological foundations क्या क्या है? What all biological foundations? जो जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने इस चीज को understand करने की कोशिश करी, the 6 important things included in this are: first is developmental flexibility, second is influence of the environment, third is neurogenesis, next is synaptic remodeling, then axonal sprouting, and last is oligodendrogenesis. ठीक है, difficult लग रहा होगा terms, but nothing is difficult. It is very easy, very basic to understand. And let me explain you. First is developmental flexibility. What is developmental flexibility? Developmental flexibility is the first slide जो मैंने आपको बताई थी. What was that? The brain never stops learning या rewire करना, या मतलब developmental never stops. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 5 years में brain will stop. No. Your brain will continue. एक flexibility है इसके अंदर, ठीक है? Learning, skill acquisition, ये इसी से आता है. Next is influence of the environment. जिस environment में आप काम कर रहे हैं, it will influence your neuroplasticity. Let us take 2 examples. First example is in case of stroke. अगर patient को थोड़ा सा cognitive problem है, we would prefer the patient to be seated in some area जहाँ पे the distractions are very less. हम उसको distractions से away रखें and वहाँ बिठा के उसको हम एक्टिविटीज या उसका जो भी फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल है वो कवर करें. बट इन द अदर केस, इसमें देखो एनवायरनमेंट कैसा रखना पड़ा हमें, इन्फ्लुएंस कैसा आया कि हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हटाना पड़ा. बट ऑन द अदर केस, अगर आपके पास कोई हाइपर एक्टिव किड आता है, ADHD का किड आ रहा है, बच्चा आ रहा है, चाइल्ड आ रहा है, एंड यू वांट दैट किड टू बी ट्रीटेड. Usually the reasons right now, जो जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में, the main reason right now is the cell phone, screen time. बच्चे इतना ज़्यादा screen के साथ attach हो चुके हैं, they don't want to attach with the public. So treating those kids, we will need an environment which is public.
कहीं उनको पब्लिक गैदरिंग्स में लेके जाना, किसी गुरुद्वारे में लेके जाना, कहीं मंदिर में, किसी पब्लिक प्लेस में लेके जाना, सो दैट देयर इंटरैक्शन इंक्रीजेस, द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस देयर ट्रीटमेंट. Next is your neurogenesis. Neurogenesis, it primarily occurs in the hippocampus, ठीक है? And it is encouraged by physical exercises, stimulating environments, and mental changes. Hippocampus we will be discussing in the further slides. I'll explain in detail there. And the synaptic remodeling, existing synapses are modified, being strengthened, weakened, or reorganized. किसी की strength की किसी particular जो आपका सर्किट फॉर्म हो रहा है उसकी स्ट्रेंथनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, कईयों की वीकनिंग की भी होती है. हमें हर एक अच्छा नहीं होता है कि एवरी थिंग व्हिच इज कमिंग टू आवर ब्रेन इज गुड एंड हमें वो रखना है. जो रखना है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, जो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड उसको हम वीक कर देंगे, और रीऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट सिनेप्टिक रीमॉडलिंग. नेक्स्ट कम्स योर एक्सोनल स्प्राउटिंग. एक्सोनल स्प्राउटिंग मींस स्प्राउट्स सबको पता है, स्प्राउट्स बनते हैं. एक्सोनल स्प्राउटिंग भी होती है, न्यू एक्सॉन्स आर फॉर्म्ड. ब्रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, आई टेल यू. ये इतनी अच्छी चीज है ब्रेन, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, एंड वी डोंट नो दैट एक्चुअली ब्रेन कैन ग्रो. एंड उसी के करके द प्रॉब्लम लाइज इन आवर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑल्सो. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो. This helps restore lost functions by creating new communication routes. And the last one is oligodendrogenesis. Oligodendrogenesis, if you see this picture, आपको पहले oligodendrocytes का function पता होना चाहिए. Then you will be able to know about the oligodendrogenesis. Oligodendrogenesis means new oligodendrocytes are being formed. तो जब वो नए बन रहे हैं, they are helping to build myelin sheath. Myelin sheath is very helpful. आपको पता है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका स्पीड अपनी जाती है न्यूरल कनेक्शंस में, इट इज थ्रू दिस ओनली. So new oligodendrocytes are also being formed. Now, how physiotherapy promotes brain rewiring? The important question जो हमसे related है. हमने बहुत सब चीजें पढ़ ली, हमने बहुत ज्ञान ले लिया about the theories, about the biological foundations and everything. But now coming on to our point, हमारे point पे physiotherapy कैसे work करती है? The first is task specific training. The second one is repetition and intensity, sensory feedback, motor imagery, action observation या mirror therapy. These are the, and last one is BCI, VR, robotics and functional electrical stimulation. These are the 6 important factors. What right now is happening is most of the physios, they actually miss some of the components from this line of action. जिससे क्या होता है, the patient is not recovering as much आपको जैसे लगना चाहिए. हम कहते हैं कि पेशेंट आ तो रहा है बट ठीक नहीं हो रहा. Why? Because something is missing from this. You are missing something. Other than this 6 parameters, I would like to add 2 more जो मेरे से इसमें skip हो गए, but I think you all know this. First is a principle of PNF. I usually tell my PG students, my students in the class also, that there is a principle of PNF, that all individuals have potentials that are not fully developed. आप सबको पता है इस बात का कि सभी इंडिविजुअल्स में एक पोटेंशियल होता है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता. PNF basically works on that principle. Now the interesting point is that आपने सबने I think हनुमान जी की स्टोरी सुनी होगी कि हनुमान जी की शक्तियों को भुलवा दिया गया था बिकॉज ही वॉज वेरी नॉटी इन चाइल्डहुड. और उनको कहा गया था कि कभी कोई आके याद कराएगा तब तुझे पता लगेगा कि तेरे में ये शक्ति है. एंड देन दैट वाज द पॉइंट व्हेन ही वेंट टू लंका, फ्लाई करके गए थे. तो आई मीन टू से कि उस टाइम पे जामवंत ने उनको वो चीज याद करवाई थी हनुमान जी को कि आप में ये शक्तियां हैं. आज के टाइम में यू आर द जामवंत, फिजियो इज अ जामवंत एंड द पेशेंट इज हनुमान जी, जिसको आपको बताना है कि आप में ये पोटेंशियल है एंड आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो भूल चुके होते हैं या उनका वो डिप्रेस हो चुका होता है. यू हैव टू गिव अ कांस्टेंट फीडबैक दैट यू कैन डू दिस, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज अ पोटेंशियल. सब में है, कोई उसका फुल यूज करता है, कोई उसका नहीं यूज करता है. ठीक है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें स्किप्ड है, दैट इज द अटेंशन ऑफ द पेशेंट. That I will again discuss in next few slides, because attention is related to some other part of the brain also. कि attention of the patient, आप कभी भी फिजियोथेरेपी का कोई भी प्रोटोकॉल टेक्निक उठा लें, उसमें एक लाइन it is always written, and that line is make the patient
confident and make the patient attentive towards the treatment. He should be attentive towards the treatment. And even we sometimes say make the patient watch the movements being done. वो तो मैंने यहाँ पे cover कर लिया, the action observation 5th point. But this part is that कि आपने patient का attention पूरा उसमें रखना है. ऐसे नहीं है कि patient is sleeping and you are doing the movements. No, the patient should be attentive that my arm is moving. This is mind muscle connection. This is very much required if we treat a patient. Next, I would like to tell few fun facts because मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, कहीं बोर ना हो गए हो. So the first fun fact I have for you is that a brain forms up to 10,000 new synapses per second during learning. Learning के टाइम पे 10,000 new synapses बन जाते हैं. And another one is that neurogenesis continues in hippocampus. Hippocampus is beautiful. We will discuss in next slides. Old age में भी चाहे 90 years old भी है, neurogenesis will take place. Next is motor imagery increases motor cortex activation by 30 to 40%. Motor imagery means just to imagine that I am going to move this part. It activates your motor cortex by 30 to 40%. Look at your brain. Brain is beautiful. ओनली थिंग इज हम उसको समझ ही नहीं रहे, अपने ही ब्रेन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट you all must have heard about manifestation. Manifestation is this only. क्या है manifestation? Just think about it. Anything you want in your life, it is just like a motor imagery. आपको कुछ imagine करना है अपने brain में, then brain तो अपना काम कर रहा है, brain is doing its work, but you are not doing. If you start doing that work, your manifestation will be done. So intention plus efforts is required with just thinking. So motor imagery increases motor activation by 30 to 40%. Next is movement is medicine. We all know this phrase is so popular nowadays. Movement is medicine because movement rewires the nervous system. Jitna move karoge, the more your brain gets rewired. That's why I always say to my students also, anyone who is nearby me, that if your parents, your grandparents are in old age, don't make them sit. उनको बैठ के आराम मत करने दीजिए. ठीक है, आराम is required, but let them do some activity because activity means movement. Movement means rewiring. Brain काम करता रहेगा, otherwise brain will become dead. धीरे धीरे आप उनको एक slow poison दे रहे हैं rest के through. तो don't make them do rest. Make them active. उनको active बनाइए. Make them involved in certain activities. Now coming on to a very interesting part, the emotional brain versus the logical brain. This is my favorite one because usually what happens in physiotherapy, we miss this part. हम सिर्फ logical brain की तरफ काम करते रहते हैं and we miss our emotional brain. Look at this picture. What is it? This picture is saying? This is saying a wise brain and a emotional brain. अब wise brain हमने पढ़ लिया. We have read motor cortex, we have read sensory cortex, everything we have read. अब बात आती है कि आपका meet the brain's emotional decision makers. वो कौन है? Who are they? They are hippocampus, amygdala, and the prefrontal cortex. Prefrontal cortex is the only part who is the part of both emotional as well as the logical brain. दोनों का part है वो, ठीक है? Hippocampus, amygdala, and the prefrontal cortex. Now, coming on to the first one, hippocampus. Hippocampus is brain's memory. मेमोरी बिल्डर है ये, ठीक है? जो भी आप लेके आते हैं ना अपने ब्रेन में, उसको बेचारा ये स्टोर करता है, चाहे वो गुड मेमोरी है, चाहे वो बैड मेमोरी है. What are its functions? Forms new memories, converts short-term memory into long-term memory, supports learning, spatial navigation, episodic memories, generates new neurons. ठीक है, नए neurons form करना मैंने आपको पहले भी बताया था स्लाइड में fun facts में कि hippocampus is responsible for adult neurogenesis. मतलब neurogenesis बड़ों में भी हो सकती है. It is not that it is only up to the age of 5. Next is role in neuroplasticity. Hippocampus का क्या role है? One of the most plastic region in the adult brain is hippocampus. आपका hippocampus सही है, everything is going to be great. It creates new synapses during learning, experience neurogenesis, strengthens circuits with repetition, and sensitive to exercise, enriched environments, and meaningful tasks. जो सब कुछ physiotherapy cover करता है. Everything is being covered by physiotherapy. So with physiotherapy, what we do basically, we are making the hippocampus strong.
नेक्स्ट, हाँ, वन थिंग अगर आपने स्किप ना करी हो, इन द पिक्चर यू कैन सी योर हिप्पोकैम्पस। मैंने तभी फोटो साथ में इसका लगाया है। नेक्स्ट इज योर एमिगडाला, द इमोशनल आराम एंड द मोटिवेशन सेंटर। बहुत लोगों को मोटिवेशन चाहिए आज की डेट में। यू गो एंड वॉच इंस्टाग्राम एंड वहां पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं हम। डोंट गो एनीवेयर, जस्ट सी दिस स्लाइड, जस्ट सी दिस स्मॉल पिंक पार्ट। देख रहे हो ना सब? दिस इज मोटिवेशन, दिस मोटिवेशन इज इनसाइड योर ब्रेन ओनली। इसको एक्टिवेट करो। यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? This processes your emotions, especially fear, stress, motivation, reward, attaches emotional value to memories, influences attention and arousal, determines what is important to learn. Okay. And what is its role in neuroplasticity? Emotion plays a huge role in what the brain learns and keep. अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. इफ एनी वन ऑफ यू, किसी के साथ भी चाइल्डहुड मेमोरी कोई ऐसी हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ लाइफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 4 years के थे, यू वेंट टू स्कूल एंड योर टीचर स्कोल्डेड योर और गिव अ बीटिंग टू यू कि आपने कुछ गलत किया, मार पड़ी, एंड दैट मेमोरी आज भी आपको वो 4 years की मेमोरी यू मस्ट बी हैविंग इन योर ब्रेन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एमिगडाला। क्योंकि इमोशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन व्हाट ब्रेन लर्न। ब्रेन उसको, वो उससे इमोशनली अटैच हो गया था, उसको वो चाहे एक नेगेटिव मेमोरी थी, नेगेटिव इमोशन था, बट वो रहा। होता ऐसा है कि नेगेटिव इज मोर स्ट्रॉन्ग, बट हमें नेगेटिव को ही सप्रेस करना जरूरी है। Amygdala boosts plasticity during meaningful tasks, reward-based learning, emotional significant activities. Stress can block plasticity, but motivation enhances it. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? I'll explain the next slide. First, we will learn about prefrontal cortex. Prefrontal cortex earlier आपके लॉजिकल ब्रेन में भी था, वहां पे ये कैप्टन था, यहाँ पे ये सीईओ है। सीईओ क्या है? कंपनी का बॉस है। बॉस है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आप इसको देख सकते हैं इन द स्लाइड। द ऑरेंज पार्ट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। व्हेनेवर वी थिंक, व्हेनेवर वी हैव टू टेक सम डिसीजंस, आपने यूजुअली देखा होगा हम क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। इट कैन बी इन अ फनी वे ऑल्सो, बट इसको ही हमारा एक्टिवेट करने का पर्पस है, दिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। एंड planning, decision making, problem solving, attention, focus, inhibition, working memory, executive control of behavior, whatever you say, they all are covered in, all are the functions of prefrontal cortex. और ये करता क्या है? It guides goal directed learning, improves attention, strengthens neural circuits, supports error correction, encourages formation of long term memory. Fine. अब लर्निंग, कुछ भी चीज लर्न करने के लिए इन तीनों का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? मेमोरी हिप्पोकैम्पस देगा, मोटिवेशन एमिगडाला देगा, फोकस आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देगा, एंड ऑल थ्री मस्ट वर्क टुगेदर टू ड्राइव अ न्यूरोप्लास्टिक चेंज। अब मैं आपको इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जो आपको मैं अर्लियर बताना चाहती थी, दैट सीईओ को सीईओ, बॉस को बॉस ही रहना है और वर्कर को वर्कर ही रहना है। आपने देखा होगा देयर आर मेनी सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, जो भी आप कोई सक्सेसफुल हाई लेवल पे रीच्ड पर्सन देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली ले लेते हैं। किसी भी इंसान को आप देखेंगे, उन्होंने किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे आके ना अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या किया होगा? एक्टिवेट रखा होगा अच्छे से, एमिगडाला को कंट्रोल में रखा होगा। एमिगडाला इज अ वर्कर, उसको वर्कर की तरह ही रखना है। डोंट लेट एमिगडाला बिकम योर बॉस, बिकॉज एमिगडाला विल, क्या करेगा एमिगडाला? एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर, फॉर फियर, एवरीथिंग। जो नेगेटिव जितने भी थॉट्स हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ कौन बना रहा है? एमिगडाला। और उससे क्या होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नीचे चला जाता है, एमिगडाला ऊपर चला जाता है। वी डोंट वांट दैट। वी वांट हमारी लर्निंग अच्छी हो, हमारी मेमोरी अच्छी हो, तो हम क्या चाहते हैं? योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शुड बी अप, बिकॉज हमें फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, हमें हमारी थिंकिंग लॉजिकल होनी चाहिए, तो योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शुड बी द बॉस। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, try to work on your prefrontal cortex and try to control your amygdala. Now, the most important part, हमने ये amygdala
and hippocampus, and the third one prefrontal cortex, जो कि ये हमारे emotional brain का part थे. ये क्यों पढ़े हमने? Why we read all this? Because motivation shapes neuroplasticity. ठीक है? मोटिवेशन की वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है. दिस इज द पार्ट विच 90% ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट आर लैकिंग अपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में. द फर्स्ट वन इज द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी. इट वाज गिवन बाय डेकी एंड रेयान. What they say that intrinsic motivation, अंदर से एक मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है for a long term engagement in therapy. Internally motivated जो फील करते हैं when a patient are internally motivated, they engage more deeply. आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, stroke patient comes to your OPD. Stroke patient in my point of view is the most neglected case. घर पे भी they are neglected, in OPD they are neglected. उनसे आप मोटिवेटेड वे में तो कभी बात करते ही नहीं है. तो व्हाट हैपन्स, वो आते हैं, यू जस्ट गो फॉर द रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट्स, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, एंड यू सेंड देम बैक. बट ऐसा नहीं है. इफ द पेशेंट्स आर इंटरनली मोटिवेटेड, दे engage more deeply and consistently, increasing repetition and intensity, which are essential for brain rewiring. Brain rewiring के लिए this is very very important. अगर आप motivated नहीं है, आपका rewiring नहीं होगा. And this theory was given by Decky and Ryan. The next one is reward based learning. Reward based learning is basically dopamine. आज के टाइम में dopamine is very much into the घूम रहा है बहुत ज्यादा. डोपामिन वी वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर आप इंस्टा पे ज्यादा देर रील्स देखते हैं तो आपका डोपामिन इज बेसिकली व्हाट? डोपामिन इज अ थिंग व्हिच मेक्स यू फील गुड. आपको फील गुड करा देता है डोपामिन. ऐसी चीज है ना डोपामिन. तो उसको एक्टिवेट करने के लिए व्हाट दिस थिंग मेंट वाज, द ब्रेन लर्न्स बाय एसोसिएशन. रिपीटेड सक्सेस ट्रिगर्स डोपामिन रिलीज. सक्सेस फील्स गुड and brain wants to repeat the action. सिंपल सी बात है. आज आपको क्लास में आप फर्स्ट आ जाते हो, आपको एक अवार्ड मिलता है, आपको रिवॉर्ड मिल गया, अवार्ड मिल गया, यू विल डेफिनेटली वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यू वांट दैट अवार्ड अगेन, दैट सक्सेस अगेन. सो सक्सेस फील्स गुड एंड ब्रेन वांट्स इट इन रेपिटेशन. वो अपने एक्शन में लेके आएगा इस चीज को. अब इसका न्यूरोप्लास्टिक लिंक कैसे हुआ इन दोनों थ्योरीज का एंड एमेगडाला का? रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग लर्निंग. जितना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी लर्निंग हो रही है एंड कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन भी हो रही है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज न्यूरोप्लास्टिसिटी तभी होती है व्हेन देयर इज अ पर्पस एंड देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. जब तक आप पेशेंट को पर्पस एंड पॉजिटिव फीडबैक नहीं देंगे, तब तक you are not going to treat the patient fully. अच्छे से एक अच्छा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जब तक एक पर्पस नहीं देंगे उसको और एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं देंगे. नेक्स्ट इज, पेशेंट आपसे हमेशा आके एक क्वेश्चन जरूर पूछता होगा. द क्वेश्चन इज, व्हाई डू आई कीप डूइंग द सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन? बार बार सेम मूवमेंट क्यों करवा रहे हो मेरे से? द आंसर इज, इस आंसर में एक एडिशन और भी करनी है जो भी हमने पीछे बोली. द आंसर इज because the repetition tells your brain this is important, keep this skill. आप बार बार कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा. इंपॉर्टेंट है तो स्किल को बचाना है, रखना है. Each attempt sends electrical signals down a pathway. The more often this happens, the stronger the pathway becomes. And now coming on to the clinical examples, जितने भी therapies, जितनी भी techniques you are going to read here, constraint induced movement therapy, gait training, mirror therapy, rhythmic auditory stimulation, amplitude based trainings, कुछ भी, whatever you are going to read here, they all are based on neuroplasticity. सब neuroplasticity के ऊपर based हैं, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई एक्शन, रिवॉर्ड एंड वो पर्टिकुलर मूवमेंट्स, टास्क स्पेसिफिक मूवमेंट्स हम सब कुछ करवा रहे हैं पेशेंट से. द ओनली थिंग इज दैट आपको उन दोनों को, लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन दोनों एक्टिवेट करने हैं पेशेंट के. यू हैव टू एक्टिवेट बोथ. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द टेक्नोलॉजीज दैट एक्सेलरेट प्लास्टिसिटी. कौन कौन से करते हैं? दे आर नॉट लाइक दिस कि आपको ये रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए ही चाहिए. बट ऑब्वियसली इफ दे आर, दे विल एनहांस योर patient's recovery. They are BCIs, brain computer interfaces, virtual reality, robotics, functional electrical stimulations, and mirror therapy. They all work in conjunction with your already adjunct to your already these
what we call traditional conventional physiotherapy. There are few recent studies which मैं तो पढ़ती रहती हूँ. I keep on reading. मुझे जो मिलता है मैंने थोड़ा बहुत इसमें भी डाला है, so that if you want something from this, you can go into the depth also. And these are certain recent studies. This is beautiful article, Hallmarks of Brain Plasticity, not related to physiotherapy, but if you want to understand brain plasticity first, this is a beautiful article. And next article is brain plasticity in the developing brain. जो वही बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि अप टू 5 years तक नहीं है, डेवलपिंग ब्रेन में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है. दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स वेरी वेल. And this is a book written by Goldberg. He is MD, and he's written a beautiful line at the end that because you said you might like it to read it, you like it to read it. And this book is The Brain That Changes Itself. इसमें ट्रू स्टोरीज हैं पेशेंट्स की विद नेम, देयर रियल नेम उसमें डाले गए हैं जिनमें न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस देखे गए थे. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक अवेलेबल ऑनलाइन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. आई थिंक आपको ऐसे ही मिल जाएगा पीडीएफ. यू कैन रीड दिस बुक इफ यू वांट टू रीड. फाइनली हमने बहुत कुछ समझा पढ़ा. नाउ व्हाट आई वांट यू टू इमेजिन इज दैट अगेन इमेजिन योर ब्रेन. हमने पहले एक क्रिकेट टीम के साथ इसको रिलेट किया था. नाउ to wind up all this what we have read since I think हो गया हमें half an hour, and now we will imagine our brain as a massive garden. एक बहुत बड़ा garden है आपका brain. Then what? Inside उसमें क्या है? Billions of tiny plants, they are growing. Some are strong, tall, connected with thick vines, and others are weak and barely sprouting. छोटे बड़े इधर उधर कुछ बन रहा है, कुछ निकल रहा है. ऐसा एक आपका ब्रेन में एक बड़ा सा गार्डन है. ठीक है. एंड नाउ हियर्स द मैजिकल पार्ट क्या है? whatever plant you water regularly becomes stronger, and whatever plant you ignore slowly dries up. ये तो नॉर्मल है. आपका गार्डन है घर में, जिसको पानी लगाएंगे दैट विल ग्रो, जिसको पानी नहीं लगाएंगे वो क्या होगा? दैट विल ड्राई अप. ठीक है. नाउ when you practice a movement, जब भी आप एक मूवमेंट को प्रैक्टिस करते हो, whatever skill कह लो इसको, मूवमेंट कह लो, whatever you want to say, you can say you water the plant. आप एक पौधे को, एक न्यूरॉन को क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं. And do more balance training, balance neurons will grow. Okay. Practice walking pathway will become stronger. ठीक है. Imagine movement, even this gives water to the plant. And lastly, the roots become thicker, the vines stretch longer, and over the time, a strong pathway forms. This is synaptic plasticity. इसको हम क्या बोलते हैं? Synaptic plasticity जो हमने पढ़ी थी. And in future, it will convert into structural plasticity. Now look at this picture. इस picture में आप क्या देख रहे हैं? एक part dried up है, एक part green है ना? I have taken this picture जानबूझ के मैंने ये picture लिया है आपको कुछ चीज इसमें शो करने के लिए. व्हाट आई वांट टू शो इज व्हेन यू स्टॉप यूजिंग अ स्किल, आप किसी एक स्किल को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, दैट प्लांट श्रिंक्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं थोड़े टाइम के लिए 4-5 मंथ्स के लिए स्केटिंग करना छोड़ दूंगी तो आई विल लूज दैट स्किल. वो स्किल चला जाएगा मेरे से. यू अनयूज्ड सर्किट्स बिगिन टू विदर. दिस इज यूज इट और लूज इट. मैंने यही बोला था, यूज इट और लूज इट. And but ऐसा ये भी नहीं है. If one plant dies, the garden doesn't stop. Others grow around. ऐसा नहीं है कि एक प्लांट सूखेगा तो सब सूखेंगे. जिसको पानी लगता रहेगा वो तो ग्रो करेगा ना. बाकी के प्लांट्स दे विल ग्रो. यहीं पे हमारी साइंस बेस्ड है सारी. फॉर आवर पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक, पार्किंसंस, जितने भी आपके न्यूरो रिलेटेड केसेस है वो इसी साइंस पे टिके हुए हैं. लुक एट दिस पिक्चर. अब ये पिक्चर आप देख रहे हो, एक ट्री, छोटा सा हर्ब टाइप है, श्रब टाइप है. इसमें क्या है? कुछ एक पोर्शन दैट इज ड्राइड, बाकी का ग्रीन है. इफ वी वाटर दिस प्रॉपरली, हम इसकी अच्छे से नरिशमेंट करते रहे, व्हाट विल हैपन? ये ड्राइड पार्ट निकल जाएगा, द होल पार्ट विल बिकम ग्रीन. दिस इज व्हाट हैपन्स आफ्टर स्ट्रोक, spinal cord injury, traumatic brain injury, Parkinson's disease. Healthy neurons expand, they form new branches and take over the lost function. जो फंक्शन खत्म हो गए थे उनको कवर अप करने के लिए साइड पे जितने भी अच्छे हेल्दी वाले हैं, दे कम अप कि ये चला गया, नो वरीज, वी विल वर्क फॉर दैट. दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब हमने क्रिकेट टीम की बात की थी कि अगर एक प्लेयर आउट भी हो गया, इंजर्ड भी हो गया, तो बाकी टीम विल टेक अप.
The same way I have explained here also. Now, what this picture is showing, वी आर पुटिंग फर्टिलाइजर. हम एक फर्टिलाइजर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं प्लांट में. फर्टिलाइजर क्या करता है प्लांट में? फर्टिलाइजर विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो बेटर, बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा, हेल्दी बनेगा. सो tools like brain computer interface, functional electrical stimulation, mirror therapy, physiotherapy, they all work as fertilizers. ये सारे क्या हैं? Fertilizers हैं. हम इनको अच्छा ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे. These techniques speed up the growth, strengthen vines, nurture baby neurons, helps new pathways form faster. Now coming on to this, अब आपको पता लगेगा why I was talking about amygdala. This is a picture, एक लॉन की पिक्चर है जिसमें ग्रास wants to grow, but actually जो weeds हैं बीच में, they are not allowing the grass to grow. You can see this, ग्रास नहीं ग्रो हो पा रही है, उसमें weeds हैं. ठीक है, तो अब क्या है, आपके घर में भी अगर पेरेंट्स गार्डनिंग करते हैं या आप लोग गार्डनिंग करते हो, तो हम यूजुअली वी ट्राई कि हम वीड्स को निकाल दें बाहर. वीड्स अगर होंगे तो क्या होगा? दे वोंट अलाउ द एक्चुअल प्लांट टू ग्रो. नेगेटिव हैबिट्स क्रिएट वीड्स. जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं जो आपका अमिगडाला प्रमोट कर रहा है, जैसे कि स्ट्रेस है, इनएक्टिविटी है, स्क्रीन एडिक्शन है, बैड पोस्चर है, पेन है, व्हाट इज ऑल दिस नेगेटिव हैबिट्स? दे आर ऑल वीड्स. एंड दीज वीड्स स्टील द न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लॉक द ग्रोथ. ये ग्रोथ ही नहीं होने देते हैं, ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं उस पर्टिकुलर न्यूरॉन को. नाउ अब हमने सब कुछ कर लिया. एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन ब्रेन में हमें मिल गया, बिकॉज वी स्टार्टेड विद अ ब्रेन्स गार्डन. एक बड़ा ब्यूटीफुल ब्रेन गार्डन मिल गया. टू रिवाइज इट ऑल, व्हाट वाज देयर? प्लांट्स फॉर द न्यूरॉन्स, branches synapses, vines connections, water practice, fertilizers physiotherapy and BCI, all that. Weeds were stress and inactivity. Garden expansion was done by neuroplasticity. अब आप लोगों को पता है कि where we have to work. Weeds को बाहर निकालना बहुत जरूरी है. For what? If you need neuroplasticity, try to understand. अगर आपका पेशेंट स्ट्रेस में है, वो कोई और उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं मिलने वाली है. वर्क ऑन दैट, तभी तो रिजल्ट नहीं आता ना. Your brain's garden changes every single day, and you are the gardener. You are the gardener, and for patients, you are the gardener. Now coming on to some myths and facts. Brain stops changing after childhood. मैंने first slide में बता दिया था. No, it continues throughout your life. Physiotherapy only helps grow muscles, not the brain. Again, it's a myth. Physiotherapy not only builds muscles, but also builds brain. If a stroke patient doesn't improve in 6 months, it's permanent. No, improvements can occur years later with targeted therapy. Targeted therapy देते रहेंगे, हो जाएगा improvement. ऐसा कुछ नहीं है. Only intensive therapy works. कभी भी नहीं, never. Not in physiotherapy also. अगर आप जिम भी जाते हैं तो intensive workout करने से कुछ नहीं होने वाला. Consistent, meaningful, task-specific therapy is more important. And nowadays, functional training is more important. Functional training has become a very important part of physiotherapy also. Neuroplasticity will give you complete recovery? No. Again, कोई इस myth में मत रहना कि ऐसा होगा. It helps improve functions, but outcomes depends upon many factors. कि कैसे type की injury हुई थी, timing क्या थी, therapy कब दी गई, कैसी दी गई, many n number of factors are responsible. Now the closing takeaway message. Two messages actually. The first is the brain is not fixed. It's fluid, adaptable, and eager to learn. Every repetition your patient performs is a message to the nervous system. Grow, reconnect, try again. नहीं हुआ तो try again. इसमें कुछ नहीं है. As a physiotherapist, we do not just treat muscles, we sculpt the brain. Brain को shape देते हैं हम basically. इतना beautiful बनाते हैं that the patient could recover properly in a limited time. And that is the true power of our profession. One thing, I was very desperate कि I wanted to add this. I would recommend everyone here to watch a movie Inside Out. आज जाके, it's Saturday. Please watch this movie. आपको मेरी बातें बहुत connected लगेंगी. You will connect to each and every slide, because if you see this picture, जो characters they are standing, they all are amygdala. Amygdala ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं. ये सब वही है. And the balls which you see behind, these balls are all the work. This is the store of basically hippocampus. ये hippocampus का storage है.
ठीक है? And this is something inside our brain, कैसे working is going on. You should understand a very beautiful movie, a very beautiful part of this. And finally, if someone asks you कि physiotherapists just work on muscles, no, physiotherapists work on brain also. Thank you. And this is my connection to all of you. You can contact me through this if any doubts, any further explanation, clarification, whatever you want. You can contact me. I have given everything, my email, my phone number, my LinkedIn, my Instagram, everything is, I am available for all of you anytime. You can ask my students also. Thank you. Thank you so much, ma'am. What a beautiful session. Like it was like really very enlightening for me as well. Not being from the same domain, I have done my domain in cardiorespiratory and still connecting with something which is of a neuro domain, very beautifully presented and taught, ma'am. Thank you so much. We have some questions. Neetu Kumari has raised hand. Yes, ma'am, you can ask question. Neetu, ma'am. If you're not right now, you can ask me in the WhatsApp group also. No Okay, worries. any other questions from our viewers, dear viewers? Any other question? Acha, Mac problem. It's a problem for me also. I'm extremely sorry. I am so poor in using technology. Matlab, thank God I am able to give this PPT. True. Okay, so I believe that there are no further questions. Ma'am, thank you so much. I have enjoyed, and I believe all the viewers have enjoyed the beautiful session which you conducted. So, if I just take back to the session, I know that ma'am has oriented us to both the things, Indian cricket team as well as the brain. Thank you so much for that, ma'am. What a beautiful metaphor and example of that. I have learned throughout the sessions how neuroplasticity works and how I can, the roadblocks which I was also facing in treating neurological as well as spinal cord injury patients, that I always, used lose my hope after 6 to 7 months, and as well as patients as well. So I know that I need to keep on trying. Thank you so much, ma'am, for a beautiful insight into your journey as well as neuroplasticity. Thank you so much, ma'am. Thank you and love you all. You are showering so much of love to me. I'm so happy and so grateful to be with you. And I actually love connecting with people because I told you I'm a lifelong learner. You should understand right now why I told you lifelong learner, because neuroplasticity never ends and I don't want that to end. And I want to learn every day. And even a junior can also teach you anytime. So always there for anyone you who wants to learn more about not only neuroplasticity, anything else also related to physiotherapy. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you to all the viewers. And I would also like to thank Dr. Darshan Parmar for conducting a beautiful session, as well as the Indian Journal of Physical Therapy and PhysioZine for joining into this. I would like to thank all the viewers as well as Silver Oak University for providing a platform to conduct such beautiful sessions. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.